honorable guests, and dear fellow students. Assalamu alaikum and a very good evening. I'm your host, Sayyid Abbas Kareem, and I warmly welcome you all to the second session of a series of webinars entitled Networking Sessions with Successful Alumni. Dear attendees, it is my distinct pleasure to announce that for the first time ever, the English Alumni Society of the Department of English Undergraduate Studies organizes a series of webinars comprising a total of 3 sessions, which are aimed to empower current students by connecting them with successful graduates who have excelled in their fields. These highly significant sessions will feature a diverse panel of alumni, each sharing their unique journeys, challenges that they faced, and how they've claimed victory against those challenges. This series of webinars is designed not only to inspire, but also to equip the attendees with practical tools and advice that can enhance their academic and career prospects. Similarly, by listening to our guest alumni speakers who have navigated the transition from academia to the workplace, participants will gain valuable insights into effective networking strategies and learn how to leverage relationships for career advancements in today's competitive landscape. Before we immerse ourselves into the rich insights that await us in today's session, I invite Mr. Sabratullah, a renowned Qari, for the recitation of some verses from the Holy Quran. Mr. Sabratullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah. Before we dive into today's discussions, I would like to take a moment to highlight a few important points for both our attendees and the panelists. This webinar is designed to promote meaningful discussion with a structured approach that allows us to focus on one guest speaker at a time. I'll be directing as much questions as possible in the given time frame to each alumni individually, ensuring we can fully explore their multifaceted experiences and insights without any confusion. And a short note for the attendees who have joined us online, you can write your relevant queries in the comment sections either on Facebook or on YouTube using the Q&A function available on the bottom of your screen.
to welcome our first guest alumnus speaker, Mr. Saqib Munir Ghazi. Mr. Saqib Munir Ghazi, an assistant superintendent of police in Pakistan, attributes much of his success to his academic journey at the National University of Modern Languages, Islamabad, where he earned his bachelor's degree in English from the Department of English UGS in 2017. During his 4 years at NUML, Mr. Saqib's critical thinking skills, personality, and worldview were significantly shaped. He credits the university for offering a transformative learning environment which not only helped him realize his full potential, but also built his confidence and resilience. A key part of his development was a specialized personality development course that encouraged him to develop both professionally and personally, preparing him for the challenges ahead. This strong academic foundation, coupled with a critical and analytical mindset, played a crucial role in his success in the Central Superior Services exam, which he passed twice. Mr. Saqib's achievements in this competitive examination speaks to the depth of the knowledge and intellectual discipline he gained at National University of Modern Languages, Islamabad. Today, as a member of the esteemed police services of Pakistan, Mr. Saqib remains deeply grateful for the lessons, values, and lifelong friendships he forged during his stay at the university. His journey is a powerful testament to the transformative impact of education, perseverance, and self belief, inspiring others to pursue their goals with dedication and determination, knowing that the right support and hard work can open doors to success. We are thrilled to have Mr. Saqib Munir Ghazi with us today to share his inspiring experiences and insights. Sir, thank you so much for joining us today in today's webinar. I'll directly start with the questions. So basically, in your introduction, I talked about how NUML helped you foster some of the qualities which help you in securing a, a good status in CSS exams. But I want you to please aid upon your experience studying for your BS English here at the university, and how did your academic background influence your decision to pursue a career in the police service of Pakistan? Ji, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, salam to everyone. Before delving deep into my own journey in the CSS examination, I would like to thank the UGS department for giving me an opportunity to speak and share my experience with the fellow university students. There's no doubt that the intellectual insight of an individual is not only shaped but also transformed in an intellectual environment. NUML was that watershed movement in my life. When I joined it in 2013, my 4 year stay at NUML significantly transformed my personality, particularly in terms of the intellectual depth. Uh, in an era of growing competition, there is cutthroat competition in every field, not only in CSS, in all domains of life. So, transforming yourself and enabling your competence and performing to your peak intellectual level are the key pillars to shape your journey into a success story. I was fortunate enough to have all these uh, available opportunities during my 4 year stay at the NUML. So it had huge influence in my overall critical thinking because CSS means a greater worldview, a mature analysis of everything. It is said that CSS is an exam in which every aspirant needs to know something about everything. So I was able to immensely broaden my intellectual horizon during my stay at the university. Uh, I would like to add some interesting aspect in my interaction that it was in 2014, a decade ago, when I came to know that
my childhood dream that was cracking CSS is I used to say I would set for the Mukabla ka imtihan since my childhood, but I didn't know what was the Mukabla ka imtihan and what was its official name. So I remembered in uh, in 2014 when I was pursuing my third semester at the university, I came to know that my childhood fantasy dream examination, the Mukabla ka imtihan, was called CSS. So it is only to inspire those individuals, those common individuals who belong to the far-flung areas, and they not only think but also believe that having an elitist educational background is imperative to crack CSS. It is not totally true. If one's schooling is not, if one is totalitarian, जो कि मेरी तरह टाट से उठ के आया है, and has opportunity to study at NUML, the university would give him or her intellectual opportunities to transform his personality and to match that level that is required in CSS examination. So I believe I would like to summarize this question that my journey to CSS would have been possible, and my story would not have been a success story if I had not the opportunity to study at NUML and make those 4 years into meaningful engagement instead of spending time. Um, so, Mr. Sahib, you talked about CSS exams and the patient that you had right from the beginning. So, I have a few questions about CSS exams preparation, the difficulties, and how to cope up with those difficulties, especially during preparation. So, I'll put question in this way that we all know CSS. The preparing for CSS exam is not a bed full of roses. It is difficult and challenging, but you have aced this exam, mashallah, twice. So I want you to please elaborate upon some specific challenges that you faced during your preparation, and how did you overcome those challenges? Gee, it is a really good question because every second aspirant has to face this question, uh, and he or she experiences those challenges when someone steps into the examination in the arena. There are multiple challenges. First of all, there's a misconception that CSS is like an exam which an ordinary individual can't crack. The mindset that you have to be extraordinary, you have to be extra something to crack this exam. There's nothing like that. First of all, you need to change the mentality. You need to have self-belief. If you have passion, if you have direction, it is just like an exam which we have been taking since our childhood. We did matriculation, intermediate, graduation. So it is just like an exam. However, there is some sort of change of nature in examination. We must know the nature and the subject matter of the exam. So the second biggest challenge, apart from the mindset that CSS करने के लिए पता नहीं कोई और किसी सियारे से दुनिया आती है, एक one mentality is that, and the second mentality is that we need to know the science of CSS. Now, what is that science of CSS? Uh, me hailing from a remote village in Tehsil Tonsa Sharif district, Deji Khan, if I can crack the toughest exam of Pakistan twice, there's no reason that a person who has good schooling can't crack it in first attempt or second attempt. The second biggest challenge is that knowing the basics, essentials of CSS. We must have some sort of reading. We at least need to know what is going on in the world, what are the key issues of Pakistan, and how can they be resolved. Thirdly, we need to know the basic. There's a basic level of maturity in your ideas. Thesis is a mature exam.
For example, there are only 12 subjects you have to crack, but the hard nut to crack is that if you stuck in any one subject out of 12, your whole journey comes back to square one. So we need to build our essentials, build our bases. When we have critical thinking, a better overview of the world and what is going on in the world. If we uh, come to that level, if we have that much maturity, and how would that maturity come from? That maturity would come from reading quality content, quality books. That would ultimately improve our thinking capacity. So when we have all these competencies, I believe challenges become the opportunities. Mr. Saqib, rightly talked about how the nature is basically different in the science. If you understand the science of the examination, it's not that of a difficult job. Now I want to move towards the study strategy, the specific strategies that you basically utilize during your preparation. So I'll put the question in this way. Okay, could you please describe your study routine and the strategies you found most effective in preparing for the CSS exams as a BS English graduate, and kindly guide us regarding the best time to begin with CSS exams preparation? Would you suggest start preparation during the degree or once the degree is concluded, please? Sorry, I was not able to listen to your the second part of question. Would you please like to repeat the second part of Sh- question? Sure, sure. So I talked about what was your personal study strategy, and would you suggest start preparation during this degree, or once the degree is concluding, the best time to prepare to start preparation for the CSS exams? Okay. The there's an issue of internet. There's a distortion. However, I understood the first part of question. You were asking what were my core strategy that helped me crack CSS. Well, from the beginning, from the childhood, I have been fond of reading. The very first strategy you need to follow is that you need to develop fondness. You need to develop interest. There's a famous quote of Plato in which he says, "Pleasure in the work puts perfection in it." So as long as you do not have pleasure in your work, the work becomes a pressure. It does not engage you intellectually and mentally. So the very first strategy you need to adopt is developing interest in your studies. Only then it will become your hobby. Secondly, it is said that you have to study for 15 hours, 14 hours to crack CSS. Uh, I believe it is overrated statement to say that you have to study for 15 hours or 16 hours. These sort of statements are given, deliberately given, for attention seeking, to get into the popularity pandemic, to brand oneself. कि मैं तो इतना पढ़ता था, I used to study 18 hours, 17 hours. It is nothing more than bluff. Uh, if you have proper study routine only for 6 to 8 hours, but provided that you have to ensure its sustainability. uh, मसला हमारा ये होता है, we get start and the journey proves a 9-day wonder. 9 दिन का बुखार चढ़ता है और वो 10वें दिन उतर जाता है. सारा सीएसएस का शौक वो it gets perished. The sustainability is the key in any field of life. Uh, so same is the case in CSS. Secondly, if you have any 6 to 8 hour routine, and you have to ensure there's no digital dictatorship while you are studying. You need to switch off your mobiles. You need to get a bit distance from social media accounts. The popularity and the chaska you are enjoying now can be enjoyed later on.
there's a whole life left for you to enjoy these life. But to ensure focus and to ensure that nothing gonna distract you from your goals, direction is important. The problem is that sometimes we study hard, we work hard, and we say that I used to study for 14 or 13 hours, but I have flunked in 4 subjects. I failed in 5 subjects. The issue is not their hard work. The issue is not their labor. The primary issue with some sort of guys is that their approach. Uh, you have to have a right approach, a right guided direction. So these are the key major strategies. And lastly, I would definitely like to add, if you visit any CSS centric library in Pakistan, in National Library in Islamabad, or if you hail from Lahore, Kadazam Library, British Council Library, uh, you would find that 9 out of 10 students are reading only. CSS is not a reading exam; it was a written exam. You must have to express your thoughts in written form, because only if you succeed in written part, only then you are capable enough to appear for the interviews. So reading is imperative. You need to take maximum mocks, written practices. Uh, Following these 4 5 steps can make CSS journey a royal road for you. So you basically talked about, I noticed it, you talked about 5 things. The first one is that we have to develop fondness, that is the passion for reading, and then sustainability is extremely important, like the consistency part. Then you talked about that we have to be focused. Procrastination is such a huge problem, and especially in today's world, where you have to basically kind of find time for your personal life and at the same time academic life as well. So that is extremely important. Then the guided direction that you talked about, and last but not the least, written efficiency, because as you said, KCS's exam is a written exam, not a reading exam. The second part of this question was basically, when students should start their preparation for the CSS exams, because majority of my class fellows recently during summer break, they started their preparation, like they were printing, they were getting copies of the syllabus, and they were starting upon the preparation. And I was a bit confused. So, what would be your suggestion? What is the best time to start your preparation? Well, the best time to start CSS exam is during the university years, because you have ample amount of time to read even those readings content which are not directly required for CSS, but they can build your base, enrich your overall intellectual capacity, and improve your competence in all the fields. Uh, I was not that much effective enough during my university years from 2013 to 17. However, I did read general reading. I used to finish a book in a week, or maximum 2 weeks. So those readings somehow in, paved the way for my CSS journey to crack it in 2 times. So if you can prepare for CSS exam during the university years, I took 7 years to crack CSS and become an ASP. From 2017 to 4th May 2020-24, we had the final result. So if a person is reading and preparing during the university years, uh, I believe he or she would not have to take 7 years. Instead, he or she can crack it into 2 to 3 years. All right, all right. Um, Sir, you also talked about the importance of guided direction, and I believe that uh, during CSS exams preparation, one of the most important thing that we need to look forward to is the support system. So, because during preparation, majority of the time we are beclouded by pressure, anxiety, and there is uncertainty. So, I want you to please talk about the importance of while preparing for the CSS exams, and how did your family, friends, or mentors contributed to your success?
Well, again, a brilliant question, because in a society where leg pulling is so common, where negativity is so common, you have to find the positivity from your family, your true friends, and the sincere mentors. Uh, on a lighter note, I would begin with a joke. If you have to crack CSS, kindly आप खानदान वालों से झगड़ा कर लें. तो जो आपके फैमिली कजन मजन है ना, उनसे अगर आपका झगड़ा चलेगा, तो you would have the ability to skip family functions. You would not be, they would not be able to inculcate any negativity, because you would be free from their surroundings. तो मेरे टीचर कहा करते थे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन कि तुम्हारी सीएसएस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी कजन के साथ दोस्ती चल रही है, फैमिली के साथ दोस्ती चल रही है. So it is just a joke. No need to get that much seriousness in it. However, in a society, in a digressive society like Pakistan, where egalitarianism is only a pipe dream, where positivity is extremely lacking, there develops a peer pressure on you. कि फलां ने तो उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई and he has been hired in BS17 in that department, and uh, there has you have spent 4 years during CSS preparation, and you have not been able to crack it any exam, excluding CSS. So these sorts of negativities uh, ultimately burn your energies. There's a famous quote: "The birth of tension is death of talent." So you have to be positive in every circumstances. It is not a royal road. This is not a royal road. You must remember, unless and until there is stress, there's lack of seriousness in CSS. So the issue is not that you need to stay away from the stress and the negativity. The issue is how to resolve it. Uh, so your support system must be extremely brilliant. You need to build bonds with the family members, with sincere friends and true mentors. Apart from that, I would like to add that you must have a strong bond with the ultimate reality as well, with Allah. You need to, if one is praying, if one is reading Quran. I have, experientially speaking, in my own humble capacity, uh, I have tested this formula when there is that much tension and there is that much stress level. If you connect to the spiritual side of your life, the situation turns quite mild for you, and the negativity that is haunting your performance somehow gets diluted on your whole life. So soul searching is another aspect you need to build during that journey. All right. Thank you so much, sir, for elaborating upon it. Now I'll move towards another question, and that is about common pitfalls. Like while preparing for CSS, each and every aspirant is expected to go through certain sort of challenges, right? Certain sort of pitfalls, or sort of uh, just because of lack of guidance, or not being foresighted. So, what are those pitfalls, and how can one avoid them, as per your experience? There are certain pitfalls while preparing for CSS. Uh, I have personally experienced two levels of pitfalls. First one is that we underrate the requirements that are critically required to crack CSS. The undermining the necessity and the requirements of CSS can be seen that when we out of all the class fellows, uh, only two boys didn't attempt to prepare for CSS. We six uh, went for the preparation of CSS. I remember the during the stay at university, we used to think that CSS is हमारी काबिलियत का लेवल चेक करने के लिए CSS कोई सही पैमाना नहीं है. we we were that much confident. मतलब हम कहते थे हमें तो यूपीएससी इंडिया का एग्जाम देना चाहिए या वो यूएन का एग्जाम होता है, तो वी नीड टू अपेयर ऑन दोज एग्जाम. कि अब क्या मतलब हमारा लेवल अब सीएसएस एसपीएससी चेक करेगी.
तो वो need to we use to undermine and underscore the level and the aptitude required by CSS. Secondly, we overrate CSS. Are we underrated? Are we overrated? It is the these are the most common pitfalls faced by every second aspirant. Overrated in a sense that we start believing from the day one we purchase books for CSS. Uh, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, but I don't think मेरा CSS हो जाएगा. So there's a need to strike balance between both the extremes. You neither need to overrate this exam nor underrate it. With balanced approach, you can crack it easily. Secondly, uh, most of the candidates have a wrong approach in CSS. They study substandard material. They stay away from the quality content, which can actually enable their thinking and thought process in a mature way. Thirdly, I believe that they read too much but write too less. There's a mismatch between reading and writing. Another key problem. And fourthly is that I believe uh, there is a crisis of overproduction in terms of notes making. Well, in terms of in the Das Kapital, Karl Marx writes that uh, capitalism has its own germs of destruction. When he writes these lines, he argues that capitalism would eventually deteriorate only because of crisis of overproduction. So this same formula applies in the CSS in the context of CSS as well. Most of the candidates overproduce their material. Uh, they have neither either they don't write at all or they write so much in their notes that they are not able to revise it properly. So if they avoid from these 4 5 pitfalls, their chances, their likelihood of cracking CSS eventually becomes improved. All right, sir. We have two questions from our online attendees, and the first question is: pursuing a 9 to 5 job, how can he manage time effectively to prepare for CSS side by side? It depends on the nature of job. For example, if one is teaching during 9 to 5 job, he have a herself or down newspaper or some apps available on the mobile if you're not able to have stationery with yourself. So if you have even half an hour, you can continue doing this process. I remember when I was teaching at a private institute, when I was traveling down the lane, I used to have a lecture or listen to any productive discussion by using mobile. So if I have 20 minutes, I would ensure that these 20 minutes are not get wasted. First of all, is during 9 to 5, if there is an opportunity to make the most use of time, one can make it. Secondly, if you have the passion to crack CSS, to become a CSP, I believe where there is a will, there is a way. You can set for the studying post 6 or 7 p.m. and you can have 4 to 5 hours easily available for you. And at the same time, if your dominating desire is to become a CSP, if your ruling passion is to join the CSS community, you would eventually wake up in the 4 in the morning, 5 a.m. in the morning. So it all depends on your mindset. All right, sir. Another question is: what are the most overlooked subjects in the CSS syllabus that candidates should focus on more for better results? There are certain subjects which are not given that much priority, or there are some subjects which are given over where there is uh, too much concentration of candidates. इनको हम कहते हैं अवामी subjects CSS के, where every second aspirant is obtained.
uh, to avoid these subjects, for example, there's hardly any concentration in philosophy. Uh, in my both attempts in 2019 and 2023, we have had only less than 1,000 aspirants in the governance and public policy and the constitutional law subject. So these subjects, and again, fourthly is the anthropology. They are less opted, and they can give better scores as compared to the other subjects. One needs to know that mm, if one has the domicile of Punjab, where there is cutthroat competition, because every year more than 150 aspirants, qualifiers even, are not able to secure allocation. Do not get allocated in any service group. So to avoid such sort of adversity, they must ensure that either they should have proper preparation of every subject, they should have extra preparation of even a common subject, or they need to revise their policy and opt those subjects uh, which are less opted, because there's less likelihood of getting targeted. All right, sir. I'm going to come up with my last question, and basically, it's about that that famous proverb which says that don't put all your eggs in one basket. So, in your opinion, what are other good career options if the CS exams do not go well for an aspirant? Well, it is a quite an interesting question, uh, but I believe there's subjectivity involved in this question. Uh, there can't be any objective analysis of this question. As far as my own humble experience is concerned, if I believe if I do not put all my eggs in one basket, I am going to relax. कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो अंदर का स्पार्क नहीं जगा पाती, if I do not have that much involvement, that much passionate consumption in that very field. कि अगर तारिक बिन जियाद ने कहा होता कि किश्तियां ना जलाएं, तो शायद बहुत से बंदे पीछे हट जाते। कहते हैं हार जाएंगे, अगर हारने लगेंगे तो भाग जाएंगे। So it all depends on your mentality. Well, again, uh, the reality is that the sad reality is that every candidate has three attempts. There's upper age limit of 30 years for a common candidate. So you cannot negate some sort of realities, ground realities which are existing there. The CSS, I believe from the day one, I believe in April 2017 when I bought books for CSS, stationery in the Urdu Bazaar Lahore. I remember that day that CSS is only an option for me. It is not an obligation. Again, uh, all the candidates need to take this exam as an opportunity, as an option, because nothing is final here. And even we have had stories of multiple persons who joined CSS, cracked it successfully, but resigned it after service of few years. So it is not the end of life. As far as the other part of the question is concerned, what are the other better options to apart from CSS is that any government department or any department, even if it is not public sector, if it is even private sector, uh, if it matches your passion, if it somehow contributes to the well-being of of your family and your society, it is worth it. I believe some if someone are listening to my talk, they may disagree. They have the right to disagree. Leaving Pakistan is not an option for me. I ranked Foreign Service of Pakistan at the number 10 out of 12 preference groups. I had the opportunity to opt for Foreign Service of Pakistan and leave the country. But I believe from the core of my heart that leaving Pakistan is not an option. Staying here, striving here, struggling here, and working for the betterment of your family and your country uh, is the only way option for a person like me. So if you prepare wholeheartedly for CSS,
I pray for all the individuals who are out there that they get allocated, they succeed, and if God forbid they don't succeed, they would succeed in life, I believe. Thank you so much, sir, for giving us your precious time. Thank you so much for sharing your insightful experiences with us. Now, I have to bring another guest alumna speaker. Um, I'm very much excited to introduce Dr. Hina Ahmed, who is an accomplished academic professional and a PhD scholar with over 8 years of experience and quality assurance within Pakistan's higher education sector. Currently, Currently pursuing her PhD at Superior University Lahore, she has a strong academic background with a BS in Modern Languages from the National University of Modern Languages Islamabad and an MS in Project Management from Capital University of Science and Technology Islamabad. Hina has established herself as a notable contributor to fields such as strategic management, sustainability, entrepreneurship, and complexity theory, making significant strides in research and academic leadership. Her research has been published in prestigious international journals with high impact factors, including Q1 journals and those recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. These publications, along with her growing citation count, reflect the relevance and high quality of her work and her areas of expertise. Hina's excellence in research has earned her recognition on the global stage, including a research grant from the HEC, a fellowship from the University of Oslo, an international conference research grant from the Mohammed bin Salman Business School in Jeddah, Saudi Arabia. As a deputy director of the Quality Enhancement Cell at Superior University, Miss Hina leads the university's efforts in maintaining and improving education standards. She works closely with accreditation bodies like the HEC, PEC, PMDC, and NBAC to ensure the universities meet national and international quality benchmarks. Her leadership has contributed to improving education standards across the country, ensuring that the universities meet national and international quality benchmarks. Her leadership has contributed to improving education standards across the country, ensuring that the universities meet national and international quality benchmarks. Her leadership has contributed to improving education standards across the country, ensuring that the universities meet national and international quality benchmarks. Abbas, you got muted. Oh, I'm so sorry. So I'll uh, I'll introduce our second guest alumna speaker, Dr. Hina Ahmed, who is an accomplished academic professional and a PhD scholar with over 8 years of experience in quality assurance within Pakistan's higher education sector. Currently pursuing her PhD at Superior University, Lahore, she has a strong academic background with a BS in Modern Languages from the National University of Modern Languages, Islamabad, and an MS in Project Management from Capital University of Science and Technology, Islamabad. Hina has established herself as a notable contributor to the fields such as strategic management, sustainability, entrepreneurship, and complexity theory, making significant strides in research and academic leadership. Her research has been published in prestigious international journals with high impact factors, including Q1 journals and those recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. These publications, along with her growing citation count, reflect the relevance and high quality of her work and the areas of her expertise. Hina's excellence in research has earned her recognition on the global stage, including a research grant from the HEC, a fellowship from the University of Oslo, an international conference research grant from Mohammed bin Salman Business School in Jeddah, Saudi Arabia. As the Deputy Director of the Quality Enhancement Cell at Superior University, Ms. Hina leads the university's efforts in maintaining and improving education standards.
She works closely with accreditation bodies like the HEC, PSC, PMDC, and NBESC to ensure that the university meets national and international quality benchmarks. Her leadership has contributed to Superior University achieving a remarkable 91.4% quality score, and her efforts have earned her recognition as a QEC star performer since 2021. Hina's unwavering dedication to academic excellence has positioned her as a respectable leader and a driving force in Pakistan's higher education community. We're excited to hear from her and gain insights into her impressive journey and achievements. Ma'am, thank you so much for joining us. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Abbas for such a long introduction and twice. My pleasure, ma'am. So basically, I'll start with the questions, and the first question obviously is about your academic background. So, could you please quickly summarize your experience studying for your BS English as in Abbas, modern I cannot language? hear you. Am I audible right now? Am I audible to the other attendees? Yes, Abbas, you're audible. Um, Ma'am, basically, I'm audible to the rest of the attendees. I think the problem is at your side. Now it's okay. I can hear you now. All right, all right. So, my first question is, could you please quickly summarize your experience studying for your BS in English as a modern language here at the National University of Modern Languages, Islamabad? And how did your academic background, especially your BS ML journey, contribute to your skill set that enables you to become a leading academic professional? All right. So being at NUML and doing BSML was I always considered it my basis of everything. Basis where I started my degree, where I like. Started my journey and made it was a great experience if I recall it. So it's just like Charles said once, it was the best of the times and it was the worst of the times. I can relate to that, so I hope being a literature student you and other fellows understand it. So बेसिकली अच्छा एक्सपीरियंस था बीएस का। और जहाँ तक बात है बीइंग अ नॉर्मल स्टूडेंट होने की, तो देखें बीएस इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स जो है ना डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं और डिफरेंट गोल्स के साथ आते हैं। मैं नमल में आई थी अपने बेसिक्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, सो आई थॉट कि इंग्लिश करके मैं अपना जो है ना एक जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं लाइक उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसको आगे फ्लॉरिश करने के लिए आते हैं। सो हमें इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखना चाहिए। और जहाँ तक मेरी प्रोफ़ेशनल इसके ताल्लुक है, जो मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी स्टार्ट की, तो बीइंग इन क्वालिटी एनहांसमेंट सेल आई कैन टेल कि मेरी जो बीएस की स्किल्स थी जिसमें हमारा राइटअप आता है। हम जितने भी जो है ना क्रिएटिव राइटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, हमारे स्पोकन के सब्जेक्ट्स हैं, हमारे एक्सप्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं, देन हमारे जो नॉवल ड्रामा जो इंटेलेक्चुअल हम स्टडी करते हैं, वो हमें 100% नहीं, लेकिन जो उसका आपके एसेंस है ना, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी टॉक में, वो उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना, वो आपको स्टैंड आउट करवाती है इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। और बीइंग एन इंग्लिश ग्रेजुएट आप किसी भी फील्ड में जो है ना वो जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि आपके पास बेसिक्स जो है ना वो आपके पास अच्छे हैं। तो आप किसी भी फील्ड में, बेशक आप मार्केटिंग देखें, कॉर्पोरेट देखें, एकेडेमिया देखें, आप जो है आईटी में जाएँ, आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि आप जो करिकुलम है, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपना करिकुलम देखें और करिकुलम में से चूज़ करें कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो उनके फ्यूचर गोल के साथ जो है ना रेलिवेंट हैं, और उन स्पेशल सब्जेक्ट्स में जो है ना वो एक्सेल करने की जो है ना वो कोशिश करें। सो मेरे लिए कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें जैसे रिपोर्ट राइटिंग है, हमें प्रोफेशनल अभी जिस सीट पे मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट बॉडीज़ के साथ, डिफरेंट जो है एक्रीडेशन बॉडीज़ के साथ, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, देन हमारे
ود ان یونیورسٹی ہمیں جو ہے نا ڈینس ڈائریکٹرس کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیشن دیتے، آل ایئر سینئرز ہم ان سے جو ہے نا بات کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے اس میں جو ہے نا ایک ریفلیکشن آنی چاہیے کہ لائک کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، اور بینگ اے نیو بی ان دا فیلڈ، سو ہمیں کسی چیز کا لیک جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو بیسک سمپل سا میسج بچوں کے لیے یہی ہوگا کہ آپ اپنے جو کور کورسز ہیں آپ وہ دیکھیں جس میں آپ نے آگے فردر ایکسیل کرنا ہے. اگر آپ کا فوکس اکیڈیمیا میں رہنے کا ہے، آپ لٹریچر پہ فوکس کریں، آپ نے آگے ایم ایس کرنا ہے، یا اگر آپ نے آگے پی ایچ ڈی میں جانا ہے. اگر آپ نے آگے پروفیشنل کوئی ڈگری لینی ہے، جیسے بزنس کی ڈگری ہے، ہر ڈگری ایچ ای سی کی پالیسیز ہیں، آپ جو ہے نا انٹر ڈسپلنس میں جا سکتے ہیں. سو وہاں پہ جانے کے لیے آپ جسٹ اپنے جو ہے نا بیسکس جو ان کور سبجیکٹس کے ہیں نا وہ دیکھیں، اور بینگ بی ایس میں رہتے ہوئے جو ہے نا آپ نے اپنے جو ہے نا ڈفرینٹ جو اسکلس ہیں، اسکل سیٹس جو آج کل کی ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے، جس میں آئی ٹی ہے، جس میں مارکیٹنگ ہے، آپ کی پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے، آپ کا جو ہے نا کانٹینٹ میٹر کرتا ہے، آپ کانٹینٹ فوکسڈ ہو. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کی جو ہے نا انگلش، آئی آلویز سے کہ یہ ایک میڈیم ہے، میڈیم آف کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن اسکل آپ کا جو ہے نا انٹرنل جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ آپ کی اسکل کو بوسٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کانٹینٹ ہوگا دین آپ جو ہے نا آگے فردر ایکسیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس صرف جو ہے نا لینگویج ہے، then language is just the language, not the knowledge. So this is my answer was. Thank you for such an insightful answer. So basically, you have been through a lot of transitions. I want you to please take us through your transition from English language background to masters in project management, and now having a career in quality assurance within Pakistan's higher education sector. Was there a defining moment that prompted this shift? And kindly give us a brief overview of the initial steps you personally opted for to establish yourself in this profession. Let me tell you, my transition started from my matriculation. I studied computer sciences in matric, then I switched to psychology in intermediate. Then I thought, okay, now let's go to literature side. Then I went to literature. Then after that, I moved to project management, and then lastly, I ended up in the business administration. So let me tell you, this was the best thing in my all journey, that I had the experience, I had the knowledge of computers, I have the knowledge of linguistics, I know the psychological aspects of people, I know the project management skills, and now the business administration. It's all the combination of multiple skills. So it's the I guess it's the main advantage I take in the professional life, جو مجھے ہر چیز میں جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. جہاں پہ مجھے اپنی جو اسکل چاہیے ہوتی ہے، آئی ٹیک آؤٹ دیٹ اسکل اینڈ آئی یوٹیلائز اٹ. سو اٹس ناٹ لائک کہ اگر آپ ایک ہی ڈسپلن میں جو ہے نا آپ جائیں تو آپ ایکسیل کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ٹاپر ہوں گے تو آپ ایکسیل کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دس از دا ہیوج مس انڈرسٹینڈنگ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور آپ کو آگے ایکسیل کرنے کے لیے جو ہے نا، اگر آپ اس مومنٹ پہ کوئی چیز نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے اپنے لیے، جہاں پہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ چیز آپ کے لیے، موو آن. موو آن از دا بیسٹ تھنگ. آپ اگلی اسٹیپ پہ چلے جائیں. پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی چیز ہے یا آپ یہاں سے کچھ گین کر رہے ہیں، دین اسٹے دیر فار اے وائل. اسی کہ اگر آپ یہاں پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں دیٹس گڈ. اگر نہیں، کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی سوسائٹی کا پریشر نہیں ہے، کوئی پیرنٹس کا، فیملی کا. ایٹ دا اینڈ آپ میٹر کرتے ہیں. آپ نے کیا آگے لائف میں دیکھیں، جب آپ نے پروفیشنل لائف میں جانا ہے، آپ ایک انڈیویجول ہیں. تو بینگ اے انڈیویجول آپ دیکھیں کہ آپ نے آگے جو ہے نا کیسے چیزوں کو لے کے جانا ہے. سو اٹس گڈ تھنگ ٹو کم فرام دا ملٹی ڈسپلنس, and it always helped me. So that's it. All right. Now, basically, you have 8 years of experience working in quality assurance within Pakistan's higher education sector. So, I want you to please describe a project that you have managed, and what were the key challenges you faced, and how did you overcome them to ensure quality outcomes? I started my professional life from teaching
in a school. So I went there for like 2 to 3 months. Then I thought, no, it's not my side of a thing. Then I went to in the same site. I went to the administrative task. I dealt with those अब इसमें थोड़ा सा ना क्रिटिकल थिंकिंग जो कि टाइम की रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन चैलेंज और इस तरह के ना, लाइक आपने एक्सेल करना है। आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास एक्सेल करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको अपने लिए एक डोमेन चूज़ करनी है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि लाइक जो है क्वालिटी एश्योरेंस जो है, जो फ़ील्ड है वो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि आई एम क्वाइट पिकी इन फ्यू थिंग्स, और जो अलाइनमेंट है वो चीज़ें की मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आपका कंटेंट, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और बीइंग अ स्टूडेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम नमल में थे या उसके बाद हम एमएस में थे या आगे पीएचडी स्टार्ट की सारा, तो स्टूडेंट की जो है ना रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और सम टाइम्स जब यूनिवर्सिटी में हम होते हैं तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मैनेजमेंट जो है ना वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास 50 का क्लास साइज़ है आपका, तो 50 में से ऑलमोस्ट जो है ना 5 और 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टीचर तक जा सकते हैं, वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनके चैलेंजेस, उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो अपने साथ ही 4 साल तक लेके चलते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव कर जाते हैं। इसी तरह आगे एमएस में भी होता है। लेकिन ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस का जो है, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया एज अ क्यूसी ऑफिसर। वहाँ पे जो बेसिक काम था हमारा रिपोर्ट राइटिंग का होता था। जैसे हमने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स करनी होती हैं हर प्रोग्राम की। फिर हमने डिफरेंट टारगेट्स हमें मिलते हैं एजीसी से, और जो हमारे एक्रीडेटेड प्रोग्राम्स हैं वहाँ से हमने उनको अचीव करना होता है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें प्रोजेक्ट्स मिले। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स का। हमारे पास यूनिवर्सिटी में लाइक 121 प्रोग्राम्स की हमने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स बनानी थी। वो टारगेट लिया, उसको स्टार्ट किया। इट वाज लाइक ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 मंथ्स जिसमें ये सारा काम हुआ। लेकिन उस सारे प्रोसेस को लीड किया, टाइमली कंप्लीट किया, ये अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो है ना पोस्ट स्टार्ट किया, जो एजीसी की तरफ से मैंडेटरी है कि ईच ईयर यूनिवर्सिटी हैज़ टू कंडक्ट दैट। इसके सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें एलोकेट किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर after submission. Then वो successful project हुआ। That two project was of 2 months or 2.5 months, सारी उसकी प्रिपरेशन, उसकी कंपाइलेशन, उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट, देन एक्सटर्नल के साथ कम्युनिकेशन, देन एक्सटर्नल विजिट कंडक्ट कराना, वो सारा हुआ। फिर उसके बाद हमारा एचईसी का विजिट हुआ 21 में, वो हमने सक्सेसफुल कंडक्ट कराया। उससे हमें जो है ना चेयरमैन और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रिसिएशन मिली। वो भी हमारा सक्सेसफुल जो है विजिट था। और फिर उसके बाद जो डेली के ऑपरेशंस हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, उसको मैनेज करना। देन ईच ईयर हम जो वाईपीआर ईयरली प्रोग्रेस रिव्यू हम पूरी यूनिवर्सिटी की सबमिट करवाते हैं, उस पे वर्किंग करना। देन उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, इसी टाइप के जो है ना सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और देन इसके बाद हमारी जो एक्रीडेटेड प्रोग्राम्स हैं, हर साल उनकी एक्रीडेशन भी रिवाइज होनी है, उनकी भी जो है ना फॉर्मेलिटीज़ को हमने कंपाइल करना है। देन वो सारे काम को कंपाइल करना, और ये सारा जब ये हम टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं, इन सारे काम के लिए हमारे पास डेडलाइंस जो है ना बहुत शॉर्ट होती हैं। मीनवाइल जो हमारे एक्सटर्नल टास्क हैं, उसके साथ जो यूनिवर्सिटी के इंटरनल टास्क, हमने डेली ऑपरेशंस जो है वो मैनेज करना। और आप क्यूईसी की अगर हम टीम देखें तो मेरे पास 8 लोगों की टीम है, और हमारे 3 सब कैंपसेस हैं और मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है। और सबको क्यूमुलेटिवली, क्योंकि हम यहाँ से एज अ हेड ऑफिस जो है ना कंसीडर करके काम कर रहे होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो ये सारे टास्क मैनेज करना, टाइमली कंप्लीट करना, और देन उसके बाद 91 स्कोर अचीव करना, दैट इज़ अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट आई गेस। बिल्कुल। और दैट्स इट। Definitely, it's definitely achievement, and it's a huge thing. Basically, I got a bit pressurized. See you while describing each and everything, that how much work you basically put on each day. Um, you have experience of research, right? So I have two questions regarding research culture of Pakistan. The first one is the problem. What are the causes of them? And then the second will be about your suggestions, or
what can be the possible solutions. So, generally speaking, the research culture in Pakistan's higher academia falls short of the vigorous standards set by the international norms. Um, in your opinion, what are the principal causes, and are these issues related to resources, training, or broader institution policies, and how do they impact the quality and output of academic research? रिसर्च कल्चर जो है हमारा अल्टीमेट चैलेंज है पाकिस्तान में। रिसर्च कल्चर को जो है ना प्रमोट करना, रिसर्च कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होना बेसिकली। हम पाकिस्तानी जो है ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम चीज़ को देख के उसको फॉलो करने की चीज़ को कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज़ तक जाने के लिए सर्टेन स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स लेने की जो है ना समटाइम्स हमारी कैपेसिटी नहीं होती, समटाइम्स हमारी इंटेंशंस नहीं होती। हमें एंड रिजल्ट तो चाहिए होता है, लेकिन उसके जो एक्शन स्टेप्स हैं वो लेना जो है ना, हमें होता है कि जो है ना एक्शन स्टेप साइड पे हो जाए, रिजल्ट बस आ जाना चाहिए। लेकिन रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जिसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिसर्च को टाइम भी देना है, आपको रिसर्च के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको रिसर्च के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको रिसर्च के लिए डिजिटल फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको रिसर्च लैब्स चाहिए, आपको रिसर्च की जो है ना, आप रिसर्च फैकल्टी के लिए सेपरेट प्लेसमेंट्स चाहिए। हमें जो है ना रिसर्च एसोसिएट्स चाहिए, रिसर्च असिस्टेंट्स चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे कल्चर में लैक करती हैं, लेकिन हम ये चीज़ कभी भी जो है ना अंडरगो नहीं कर सकते कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो सक्सेसफुल हैं वो रिसर्च की बेस पे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेस पे हैं। हमारे बजट में जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड ज़रूर होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है वो हमें कहीं पे भी जो है ना अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रही होती। लोग पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीइंग अ रिसर्चर, मैं जब दूसरे अपने फेलो रिसर्चर्स का काम देखती हूँ, उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स देखती हूँ, हम तो सोशल साइंसेज और आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्चर्स हैं, जो नेचुरल साइंस में काम कर रहे हैं, जो अप्लाइड साइंसेस में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल साइड पे हैं। यू बिलीव मी अब्बास, उनकी इनक्रेडिबल रिसर्च। मैं भी आपके साथ एक रिसेंट एक्सपेरिमेंट शेयर करती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में ना, हमारे पास मेडिकल साइंसेस में एक मैडम है, उनने अभी जो है ना मिल्क स्ट्रिप्स जो है ना वो स्टार्ट किए हैं, डेवलप किए हैं। उनकी स्ट्रिप्स ऐसे हैं जैसे हमारे पास प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स होती हैं, उस तरह से उन्होंने मिल्क स्ट्रिप्स की हैं। उनकी कॉस्ट जो है दैट वुड बी ऑफ अराउंड, अभी पेटेंट के जो है ना ड्यूरेशन में चल रही हैं, वो रजिस्टर होगा देन वो पब्लिश जो है ना उसमें मार्केट में प्रोडक्ट आएगी। उसकी कॉस्ट अराउंड अबाउट 50 to 60 रुपीज़ होगी, और उसमें हम जो हमारे घर में फ्रेश मिल्क हम लेते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं कि अगर वो फ्रेश मिल्क, क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या वो हमारे लिए जो है ना यूज़ेबल है, या क्या वो केमिकल्स से बना हुआ है, या पाउडर मिल्क है, क्या है ना वो चीज़। उसके लिए एक स्ट्रिप बनाई है, उसकी कॉस्ट वुड बी अराउंड 50 to 60 रुपीज़ आई गेस। लेकिन ये एक रिसर्च है। अब इस रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए फंड्स जो है ना, हमारे पूरे साल के फंड्स इस प्रोजेक्ट पे गए हैं, एक प्रोजेक्ट पे। दैट मीन्स कि ये अब जो है ना प्रोडक्ट मार्केट में आएगी, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनली जो है ना वो डेवलप होगी। ये सिर्फ एक केस मैं आपके साथ बता रही हूँ, और ये वो केस था जब वो जो है ना एचओडी थी, तो वो इस चीज़ को आगे जो है ना बता सकी थी। अदरवाइज कोई और यहाँ पे होता तो उसको डेफिनेटली यहाँ से पाकिस्तान से तो फंडिंग नहीं मिलनी थी। उनने अपना प्रोजेक्ट जो है ना बाहर सबमिट कराना था, और वहाँ से उनको फंडिंग मिलनी थी, और सेम पाकिस्तानी मेंबर का प्रोजेक्ट वो बाहर की एफिलिएशन के साथ पब्लिश हो जाना था। तो वो डेवलपमेंट किसकी होनी थी? बाहर फॉरेन कंट्री की, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं। आज जापान देख लें, चाइना देख लें, यूएसए देख लें, जर्मनी देख लें, ये प्रो कंट्रीज़ हमारे जो है ना रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, हमें ग्रांट्स देते हैं, हमें फंड्स देते हैं, हमारी की हुई रिसर्च हमारे टाइम को अपने एफिलिएशन के साथ मार्केट में पब्लिश कर देते हैं। दैट इज़ द मेन चैलेंज जो हम पाकिस्तान में जो है ना बीइंग अ रिसर्चर फेस करते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं, आई हैड अ रिसर्च ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उस पे मैंने एक पेपर लिखा। मैंने जो सऊदीया में कॉन्फ्रेंस में ना मैंने सबमिट करवाया। जैसे ही बैठे हुए देखते हुए ना तो वो एक्सेप्ट हो गया। उनने मुझे फुल स्कॉलरशिप पे जो है ना अकोमोडेशन, एयर फ्लाइट्स, और वहाँ का 7 डेज़ की ये जो कॉन्फ्रेंस है उन्होंने स्पॉन्सर की।
जस्ट बिकॉज रिसर्च है ना, मेरा उनसे कोई पर्सनल लेना देना कुछ भी नहीं है। तो रिसर्च को जो है ना बहुत स्कोप है। और अगर पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी ने कहाँ कहीं पे भी अगर आपको डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, देन जस्ट फोकस ऑन रिसर्च, इन्वेस्ट ऑन रिसर्च, इन्वेस्ट ऑन रिसर्च ओरिएंटेड पीपल, हाई रिसर्च ओरिएंटेड पीपल। रिसर्च बैकग्राउंड मैटर्स। अगर पाकिस्तान ने डेवलप होना है आगे, तो डेफिनेटली रिसर्च इज़ द ओनली थिंग जो पाकिस्तान को आगे जो है ना वो लेके जा सकती है, इंस्टीट्यूट को आगे लेके जा सकती है। और बाकी यहाँ पे हम पाकिस्तान में ट्राई कर रहे हैं, हम बीइंग अ पाकिस्तानी यही कर सकते हैं जितना हम कर सक रहे हैं। बाकी ये है कि जो आगे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास रिसर्च में बहुत स्कोप है, आपको बहुत मिलती है, आपको बहुत ग्रांट्स मिलते हैं, बहुत पर्क्स हैं। काम आपने एक कमरे में बैठ के करना है, लेकिन जब वो काम हो जाना है आपका तो वो दुनिया ने देखना है। दैट व्हाट मैटर्स, वो आपकी सक्सेस है। सक्सेस ये नहीं है कि आप जाके जो है ना एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, सक्सेस ये नहीं है कि आपने 4 GPA ले लिया, आपने गोल्ड मेडल ले लिया। गोल्ड मेडल कुछ भी नहीं है, वो वन टाइम अचीवमेंट है आपकी। आपकी पब्लिशमेंट्स, आपकी सारी रिकग्निशंस, आपकी अचीवमेंट्स जब ग्लोबली रिकग्नाइज होती हैं, वो आपका फ्यूचर है, वो आपकी कंट्री का फ्यूचर है। आपने जब सक्सेस की तरफ जाना है तो आपने बीइंग इंडिविजुअल नहीं, हम कलेक्टिवली सक्सेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। और बीइंग QEC मेंबर में यहाँ पे हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी, हमारा विजन है टू बी लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी बाय 2028, और हम उसके लिए हर मुमकिन कोशिश जो है ना कर रहे हैं। All right, ma'am. Could you please talk about these certificates and some of the other photos? सर्टिफिकेट्स बेसिकली अब जब हम जो है ना डिफरेंट डिसिप्लिन से मूव करते हैं, तो आपको वहाँ पे रिटेन करने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। यहाँ पे जो राइट साइड पे हमारे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक सर्टिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है बेसिकली। ये यहाँ बीइंग अ QEC में नॉमिनेट हुई थी। हमारा जो है ना, जैसे QEC HEC जो है ना डिफरेंट कमेटीज़ बनाता है डिफरेंट एक्सटर्नल रिव्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सादिक कॉलेज बहावलपुर में ना वुमेन यूनिवर्सिटी में एक केस हुआ था, जिसके लिए एक कमेटी HEC ने डेवलप की थी। फॉर्चुनेटली वहाँ पे जो कन्वीनियर थे कमेटी के, वो नमल यूनिवर्सिटी के डीन मैनेजमेंट साइंसेस थे उस टाइम के, डॉक्टर नवीद अख्तर। उनसे मुलाकात हुई वहाँ पे। फिर डायरेक्टर QA थे साथ में, और मैं एज अ स्टार्ट, हर जब भी कोई कमेटी बनती है उसमें सीनियर मेंबर और जूनियर दोनों जो है ना, ये कमेटी की फॉर्मेशन का रूल होता है, सीनियर और जूनियर दो। तो एज अ जूनियर मेंबर मैंने उसमें जो है ना नॉमिनेशन थी मेरी। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस टू There's internet connection problem with Miss Hina Ahmed. I hope she joins us speak sooner. Ma'am, could you please talk to her? आई एम सॉरी, आई थिंक मेरा जो है ना दूसरा कनेक्शन लूज हो गया है, तो मैं यहाँ से जो है ना दोबारा ज्वाइन करती It's हूँ। all right. It's all right. मैं एक्सप्लेन कर रही थी कमेटी का। तो कमेटी की फॉर्मेशन में हम गए बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमने फुल डे जो है वो स्पेंड किया। तो काफ़ी अच्छा उसका भी था कि हम एक सीनियर मेंबर के साथ जो है ना, और भी नेशनल लेवल पे आपकी नॉमिनेशन होना वो भी एक आपकी जो है ना ह्यूज सक्सेस है।
پھر رائٹ سائڈ پہ ہماری کوالٹی ایشورنس کی جو ہے نا، جب ہم کسی بھی کمیٹی میں ممبر بنتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ہوئی تھی. DGHEC ہیں ہمارے ساتھ، پھر واجد سبحانی صاحب ہیں جو کراچی یونیورسٹی کو جو ہے نا QA کو ڈیل کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے نا ڈائریکٹر QA ہیں HE سے. سو یہ ہمارا جو تھا نا، اس طرح سے کسی بھی کمیٹی کی پریپریشن کے لیے ہم جو ہے نا ورکنگ ہوتی ہے. Next slide, please. Miss Hinak, could you please talk about these two certificates? سلائڈ آئی گیس میرا انٹرنیٹ میں. اچھا، ایک سرٹیفکیٹ ہمارا ہے OBE بیسڈ ایجوکیشن کا. کوالٹی ایشورنس میں رہتے ہوئے ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ کریکولم پہ ہوتا ہے، اور ہم نے یونیورسٹی میں جو ہے نا آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کی ہے. اور وہ امپلیمنٹیشن سے پہلے پنجاب ہائر ایجوکیشن نے جو ہے ٹریننگز کروائی تھیں QEC آفیشیلس کی. تو وہاں پہ میں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے نامینیٹ ہوئی تھی. دین ہم نے یہ ٹریننگ وہاں پہ فل ڈے جو ہے ٹریننگ تھی وہ اٹینڈ کی، جس میں ہم نے بیسکس آف آؤٹ کم بیس ایجوکیشن کو ہم نے اسٹڈی کیا. ہمارے اچھے انٹرنیشنل اور نیشنل ٹرینرز نے اس پہ جو ہے نا ٹریننگس وغیرہ کرائی. دین یہ وہاں کی جو ہے سرٹیفکیشن ہے. اینڈ دین نیکسٹ سرٹیفکیشن ہماری اگین HEC کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ تھی، جو ڈفرینٹ لیولس پہ اور ڈفرینٹ ایئرس پہ کنڈکٹ ہوتی ہیں. یہ ہمارے ریسرچ ایکسیلنس ایوارڈس ہماری یونیورسٹی میں کنڈکٹ ہوتے ہیں. جسٹ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہماری یونیورسٹی ریسرچ فوکسڈ ہے، اور ریسرچ کے لیے ہمارے جو ہے نا سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم ریسرچ انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں. اچھے پیپر پبلش ہونے پہ جو ہے نا آپ کو کیش بھی مل رہا ہے، آپ کو کیش انسینٹیوز بھی ہیں، آپ کی کانفرنس اور آپ کی ڈفرینٹ ریسرچ کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے جو پروگرام میں چیئرمین ہیں جن کا یہ ویژن ہے، اور ساتھ میں ہمارے پرو ریکٹر ہیں ڈاکٹر پروفیسر نظام الدین صاحب. These are some other slides. یہ I میری think some پیپر achievements of. پبلیکیشنس کی جو ہے سلائڈس ہیں. ہمارے جتنے پیپر پبلش Hmm. ہوتے ہیں، دین ہم یونیورسٹی گروپس میں اور اپنے جو ہے نا سوشل میڈیا پورٹلس پہ وہاں پہ ہم ایک لائک انکریجمنٹ کے لیے کہ لائک اور لوگ بھی جو ہے نا انکریج ہوں ریسرچ کو لے کے، نیچے جرنلز اور ان کے جو ہے نا ڈیٹیلس دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسرچ 4.8 2.1 اینڈ 4.23 امپیکٹ فیکٹر. آئی ہوپ آپ یہ ٹرمینالوجیز انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. لائک یہ ان ایکچوئل اچیومنٹ کنسیڈر ہوتی ہے امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش کرنا. Definitely, definitely. I'm also personally very much into research. Currently, I'm studying research methodology in my sixth semester. So this is sort of, I'm inspired. I'm getting a lot of inspiration for you, and thank you so much for that. Now we have two questions from online attendees. So the first question is about there is often a focus on quantity over quality in publication. What with a prevalence of low impact publications, how can quality standards for research publications be improved and enforced in Pakistan? ہماری ریسرچ پالیسیز جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. لائک ہم اگر ریسرچ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم سکوپس انڈیکس ریسرچ کنسیڈر کر رہے ہیں. ریسرچ کوالٹی ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی بالکل میٹر نہیں کرتی. آپ نے جب اپنی پروفائل بھیجنی ہے کہیں پہ تو آپ نے آپ کے جرنلز کے نام سے اور جرنل کے جو ہے جو انڈیکسنگ ہے وہ دیکھتے ہی آپ کی جو ہے نا CV، آپ کا ریزومے جو ہے نا وہ سائٹ پہ کر لیا جاتا ہے کہ لائک دیز آر دا پیپل ٹو کال، یہ ہیں ہمارے جو ہے نا وہ لوگ. باقی آپ جیسے ریسرچ ہے، ریسرچ اگر اچھی ریسرچ ہوتی ہے تو وہ اسپیک آؤٹ کرتی ہے. اس کے الگ جو ہے نا اب میں آپ کو بتاؤں، ایک پیپر پبلش کرانے کے لیے لٹرلی ہمیں 1 to 1.5 ایئر لگ جاتا ہے، جسٹ بیکاز کہ آپ اسے جو ہے نا
ایک اچھے جرنل میں پبلش کریں. اور کوالٹی پہ ہم اگر فوکس کریں تو میں آپ کو بتاؤں ہماری یونیورسٹی میں ریسرچ پالیسی ہے جو فوکس کرتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ایچ ای سی کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا ہم ریسرچ لیتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ کے یونیورسٹی کا ویژن ہے، ویژن کے ساتھ آپ نے الائنمنٹ کرنی ہے، دین آپ نے جو ہے نا ریسرچ کو فوکس کرنا ہے. تو ہم نے ریسرچ مینڈیٹری کی ہے پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس پہ جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. تو ہر اسٹوڈنٹ جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک پیپر اسکوپس انڈیکسڈ وہ مینڈیٹری ہے، وہ پبلش ہوگا. دین اس کے بعد جو ہے نا آگے ڈگری اس تک جو وہ لے سکے گا. ادروائز جیسے اگر ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا دیکھیں تو ان نے قرآن پاک کا ایک حفظ کا رکھا ہوا ہے، ناظرہ ٹائپ جو اورل ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر یونیورسٹی کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں ریسرچ کو لے کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. تو آئی وڈ سے کہ ریسرچ پالیسی ایچ ای سی منیمم گائیڈ لائن دیتا ہے، لیکن یونیورسٹی اپنی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے گائیڈ لائنس پہ ورکنگ کر سکتی ہے، اپنی پالیسیز کو ریڈیولپ کر سکتی ہے، اپنی جو ہے نا کوالٹی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی اس ریکوائرمنٹ کو فوکس کرتے ہوئے پالیسیز بنائیں. دین آپ اپنے ویژن کو کر سکتے ہیں. تو کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں. All right, all right. There's another question, and that Andy want to ask: do you think social media brain rot has an effect on students when it comes to their academic performance and integrity? سوشل میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا آپ کے لیے ایک ٹول ہے. اس ٹول کی یوٹیلائزیشن میرے لیے ڈفرینٹ ہے، آپ کے لیے ڈفرینٹ ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت انٹریکشن کی جو ہے نا وہ پلیس ہے، وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اس کو لے کے. تو آئی وڈ سے کہ جو آپ کا جو ہے نا تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو چاہیے، لیکن وہ تھوڑی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا آدھے گھنٹے کی ہو جائے، وہ 6 گھنٹے کی ہونا مینڈیٹری نہیں ہے. اور سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری جو ہے نا چینلز ایسے ہیں جو ایکڈیمکس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہر ڈومین کے جو ہے نا چینلز بنے ہوئے ہیں. اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا سوشل میڈیا سے اچھا جو ہے نا لرن کر سک رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، تو آپ اچھے چینلز کو جوائن کریں جو نالجیبل ہوں، جو آپ کا جو ہے نا انٹلیکچوئل لیول کو سپورٹ کریں، آپ کو نالج دیں، انفارمیشن دیں، رادر دین کہ آپ جسٹ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ اس پہ اسپینڈ کریں اور اس کے ٹیک اویز کچھ نہ ہو. آپ ٹائم بے شک سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کریں، لیکن اس کے جو ٹیک اویز نوٹس ہیں وہ اچھے ہیں، دین اٹس گڈ، آپ اسپینڈ کریں. کیونکہ لائف تو آپ نے جو ہے نا اسپینڈ کرنی ہے، آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے، آپ کو اسٹڈی بھی چاہیے، کیونکہ بینگ اے ہیومن یہ چیز مینڈیٹری ہے. All right. Miss Hannah, I'll ask last question because I have to bring in the last guest alumni as well. And we have just 30 minutes, 35 minutes left basically. So, with growing emphasis on global competitiveness and digital transformation in education, how do you foresee the role of quality assurance evolving in Pakistan's higher education sector over the next 5 or 10 years? And how are you personally preparing for those challenges? کوالٹی ایشورنس بیسیکلی ابھی اگر آپ ریسنٹلی جو ہے نا اپنے یونیورسٹی کے کیو ای سی سے اویئر ہیں تو ہمارے اپنے پورے کوالٹی ایشورنس سیکٹر میں نا ٹرانزیشن آئی ہے. ہمارا نیو فریم ورک جو ہے نا کوالٹی فریم ورک ابھی لاسٹ ایئر فال 23 میں نا PSG 23 کے نام سے انیشیٹ کیا گیا. ابھی تو ہم اس میں جو ہے نا ٹرانزیشنل فیز میں آلریڈی. تو آئی ہوپ اگر یہ جو ہے نا سارا جو بھی فریم ورک ہے یہ انٹرنیشنل پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا بنا گیا ہے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے دیٹ مینس کہ جو ہے نا امپروومنٹ آتی ہے. کیونکہ پہلے سسٹم جو تھا ٹریڈیشنل تھا اور اب ایجوکیشن ٹریڈیشنل سے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، آپ کے پروسیسز ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں، آپ آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز میں جو ہے نا ڈیجیٹلائزیشن آ رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی کوالٹی ایشورنس میں بھی جو ہے نا ان فیوچر بہت ساری اپروچز ڈیٹا ڈریون ہوں گی. وہاں پہ ایکسیل کرنے کے لیے جو ہے نا کچھ اسکلز
हैं जैसे डेटा एनालिटिक्स जो है ना वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डाटा के साथ है। आपने जो है ना थ्योरी आपकी पीछे रह गई है, अब आपकी जो है ना प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी स्किल्स, कॉम्पिटेंट होना और ये सारी जो है ना डाटा ड्रिवन क्वांटिटेटिव जो है ना चीज़ें, फिगर्स, डिजिट्स, जिसमें आप अपना इम्पैक्ट शो करें। अगर आप डिफरेंट हम बात करते हैं क्यूसी में होते हुए, हम रैंकिंग्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अब रैंकिंग की तरफ जा रही है। रैंकिंग्स की तरफ क्यों जा रही हैं? क्योंकि अब इंटरनेशनली आपको अपने आप को कम्पीट करने के लिए उनके साथ, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए फिर हमें उनके स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट भी करना है। सो अभी तो हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हैं। तो इंशाल्लाह अगर तो इसी तरह डेडिकेशन के साथ जैसे हम रैंकिंग्स की तरफ जा रहे हैं, अभी नमल की भी रिसेंटली क्यूएस में काफ़ी अच्छा इन पाकिस्तान रैंक आया है। तो लाइक इट्स अ गुड थिंग। हम दैट मीन्स कि हम जो है ना इंटरनेशनली अपने आप को जो है ना चीज़ें अपनी प्रैक्टिसेस में इम्बेड कर रहे हैं। इन अ वन वे तो कुछ भी नहीं होगा इन अ वन गो, लेकिन ये है कि जो है ना ग्रेजुअली आहिस्ता 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 जो है ना विद इन 5 और 10 years इंशाल्लाह हम अपने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ जो है ना हमारा एजुकेशन सेक्टर इवॉल्व कर रहा है, और इंशाल्लाह पॉजिटिव साइड की तरफ जो है ना हम फॉलो करेंगे इन फ्यूचर। Inshallah, inshallah. Thank you so much, Miss Hannah, for joining us today, and thank you so much for sharing insightful experiences with us today. Now, I'll move towards our last guest alumna speaker, Miss Amna Ahmed. She's highly skilled content writer who graduated with a BS in English Language and Literature from National University of Modern Languages in 2022. Her academic achievements and passion for writing set the foundation for her career, which began during her studies when she worked as a ghostwriter and freelance writer on Fiverr. Collaborating with international clients, she quickly built a strong portfolio showcasing her talent and dedication to the craft. This early experience laid the groundwork for her successful journey in the content creation industry. After completing her degree, Miss Amna joined a software house as a senior content writer, where she excelled in producing high quality content for both local and international clients. Her expertise in marketing and SEO projects allowed her to engaging content that met the unique needs of diverse clients. Her ability to create compelling narratives and her strong work ethic led her to take on a leadership role as senior content writer and team lead at a UK based company. In this position, she oversees content strategies and guides a team of creative content writers, further solidifying her reputation in the field. Over the course of a 6 year career, Ms. Amna has demonstrated an impressive ability to adapt and evolve in a fast paced industry. Her passion for content creation combined with her leadership skills has made her an invaluable asset to her organization. She continues to inspire and mentor others in her field while furthering advancing her own career. Amna is truly a force to be reckoned with, and I'm so thankful to you for joining us today. Thank you so much for having me. Um, That was a big introduction. My pleasure. You basically deserve it, and really it's inspirational. So I'll start with your academic background. How has your BS in English prepared you for your current role as a senior content writer? In what ways have you been able to apply the skills you've learned during your degree to your day-to-day work? I'd say BS English has done a lot of good to me when it comes to content creation because first thing that comes in content creation is writing. So I learned that when I was a student in NUML. Other than that, our teachers they have really pushed us कि भाई research करो, think out of the box, critical thinking की तरफ जाओ. This is one of the key factors when you're doing this BS English language and literature because you have to learn the perspective of the writers. You have to think in a different way. So that has helped me in creating a content that others could understand. I used to learn that how writers are engaging their audience when it comes to a novel or a play or anything. That has helped me being able to write content that was liked by many. And then another thing that has helped me is being able to present myself, which is very important in every industry. When you have to present yourself when you're going in the practical field.
So BS English has helped me being able to present myself with the amount of presentation we used to give. I think it was supposed to happen. So I think these are the things that have helped me in BS English, that has helped me with my career. And then research is main thing that I do in my day-to-day life. I when we are doing our degree, be it any degree, not just BS English, you have to work with the team. So that has helped me manage a team. I manage a team of 6 to 7 people. So this is thing, being able to work with the team has helped me a lot. And then BS English have taught us आपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को लेके कैसे उनको इजी करके चलना है, बिकॉज बिग वर्ड्स don't fit in the writing. You have to be very concise, you have to be able to break things into easy way. तो वो चीज़ जो है मुझे लगता है BS इंग्लिश ने बहुत हेल्प किया है मुझे. All right. Now the second question is basically what are some of the biggest challenges you've faced in the content writing industry in Pakistan, and what strategies have you implemented to adapt and overcome obstacles and your career? In Pakistan, I believe there are very limited opportunities for a content writer because Hmm. there is this field is very saturated. This is not just for someone with the BS English degree. I work with someone who's done medical degree, so this is a big saturating field. So this was a, like a very big competition to come in, because everyone is now doing it. When I first started, there was no one to guide me. Content writing was, I started in 2018. It was just an evolving field back then, and not many Hmm. people were there to guide you. Digital marketing was just starting, and things were changing. When Corona came, I remember there were like things were changing in days. बात आप एक दिन एक तरह से कंटेंट देख रहे हो, नेक्स्ट डे एक ट्रेंड ही बदल गया. So that was the biggest difficulty I had faced. उसके बाद plagiarism is one of the big problem in this field. आप किसी का content उठाने से उसको बस replace करके लिख देते हो. तो that is why clients now are very sharp. वो आपका run करते हैं plagiarism tools के through, आपके content run होता है and everything. So I think वो चीजें जो थी ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया था मेरे लिए ये काम करना. Hmm. और to overcome these challenges, I think the one thing I did was to stay in contact with trends. LinkedIn पे जाएं, there are different. पहले तो Facebook ही ज़्यादा होता था, तो there are bloggers, there are people जो post करते हैं changing trends. Follow them. What I did was to follow them. Then I knew back then that simple content writing is never going to help me excel in this field. It's very basic. So I had to learn different skills like SEO, ASO, these kind of marketing. To to overcome my challenges being a content writer in Pakistan was to learn these side things to excel in my field. Hmm. So, you basically talked about research, right? Because okay, English literature or BS English, it helped you in empowering you in that faculty. So, content writing, it's all about research. It requires deep understanding of the subject matter. How do you approach research and ensure that writing is both accurate and engaging? Uh, uh, for research, you have to go through many platforms. Cura is a very good one to do your research. And then I don't think what many people do is they open one blog, they read it, and they think the research is done. But that's not the case. You have to go through at least 5 to 6 top ranking blogs. You have to understand how these blogs or these articles are ranking and what are the facts that is making them distinct from one another. To conduct thorough research, I think you have to go through different platforms, not just one. Verify the facts. I will when I write, if I am going through 6 blogs, they will all have different information. So you have to find out which is correct. Accuracy matters now. पहले it was not a big thing, but अब जब आप ब्लॉग लिखते हैं accuracy बहुत मैटर करती है. गूगल आपका खुद रन करता है वो टेस्ट. So that means you have to like verify your things. You have to break it down. You have to. और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अर्ली मेरे जिनसे मैंने हेल्प की थी अपने कंटेंट राइटिंग करियर में, उन्होंने बताई थी कि लिखो ऐसे कि 7 साल के बच्चे को भी समझ लगे. बट ऑब्वियसली यू डोंट राइट इट दैट वे कि 7 साल का बच्चा पढ़ेगा तो नहीं.
but still you have to make it very simple. So आपकी research में आपको उसको simplify करना भी आना चाहिए. You have to learn about storytelling. You have to be able to engage your audience, and then I think real life example is one thing जो आपको बहुत ज़रूरी करना अपने blog में. When you write, people just don't want information. They want to get connected to their writing. So that is a main reason कि आपको एक real life example डालें अपने उसके अंदर. वो ढूंढें आप, वो research आपको करें, आप scholarly निकालें अपने सॉरी आर्टिकल्स, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, आप देखें, और अगर if the topic requires you to talk to people, just go around, talk to people, professionals on LinkedIn. They're always ready to help. तो there are many ways जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं और एक्यूरेट बनाते हैं अपनी राइटिंग को. So basically, vivid research, like you have to go through proper, credible blogs in order to collect your content. Then you have to stick with the idea of simplicity and then real life examples. Yes. Okay. You basically talked about when you started content writing, there was one difficult and there was about the changing trends. So how has the field of content writing evolved since you started, and how do you stay updated with industry trends, especially SEO changes and new content strategies? Oh, when I started content writing, there was very basic. हमारे पास एक ही टूल होता था, क्वेल बोर्ड, जिससे रिफ्रेश करके आप लोग छाप सकते थे. तो it was very difficult to do content writing. वो तो totally research based था. Now it has changed so much. आप लोग chat GPT यूज करते हैं. I don't say be a servant to a tool. Tool is just to help you. तो एक होता है कि लोग कहते हैं कि help ही ना लो. That is wrong. Take help from chat GPT. अपनी research के लिए उसको use करें. That is a very time saving tool. Meta.ai and all the AI tools, they're very helpful. आप उनको use करें. हमारे टाइम पे ये नहीं था. हमारे टाइम पे एआई नहीं आती थी. 2018 में एआई का इतना नहीं था. हम तो वही रिफ्रेश करके डाल देते थे कंटेंट. सीधी सी बात है. When we started, but now things have changed. And then there was another thing regarding keywords. When I started, you had to do keyword stuffing. उसमें ये होता है कि you have to put keyword हर थोड़ी देर बाद, और उससे आपका कंटेंट रैंक करता है. आपका ब्लॉग टॉप पे आता है गूगल सर्च में. Now if you do keyword stuffing, Google उठा के दूसरे पेज पे फेंकता है आपका आर्टिकल, because that's not acceptable anymore. तो अब आपको चाहिए होता है, there is parameter कि कुछ specific words के बाद ही आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं अपना. not like all the time. आप ऐसे नहीं डाल सकते हैं. और to stay updated, like I said before, LinkedIn is a very good platform to stay updated. वहाँ पे updates आती हैं, professionals बात करते हैं about changing trends, about SEO's changing trend, what is happening in the field, और उनको फॉलो करें. ऑलवेज गो टू लिंक्डइन. आई जस्ट प्रीच इट टू एवरीवन कि लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें. देन क्योरा इज अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब एनीथिंग चेंजेस, पीपल हैव questions, like many questions, and they post it on Quora and Reddit. To go to these platforms, I used to go there. I used to learn about things. अभी भी even जाती हूँ, because industry and trends are changing a lot. Then there are many webinars, बहुत सारे free होंगे. There are different sessions जो आप attend कर सकते हैं. Go to them, learn from professionals, और research अपनी करते रहा करें. आर्टिकल्स आते रहेंगे, पढ़ते रहें उनको, और गूगल के सेकंड पेज पे जाके नहीं. दैट we in our language call it a graveyard, और वो सिर्फ वही जाते हैं जिनका आर्टिकल है. Always stay on the first page of Google और वहाँ से आर्टिकल्स रीड करें. All right, all right. Portfolio is such a huge problem in content writing. So, how did you go about your portfolio as a content writer? And what types of projects or clients did you seek initially? And please tell us, what role has networking played in building your portfolio? uh, it was tough for me, especially because I started as a ghostwriter. And when you are a ghostwriter, you don't have any claim to your writing. I cannot just go around showcasing my work because I don't own it.
that was just for someone. Then I started outsourcing because मेरे time पे इतनी opportunities नहीं थी. I had to go इस तरह के छोटी छोटी जगहों पे ताकि मेरे से कोई experience हो. So it was tough, but I tried to keep one or two articles. एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मीडियम. वहाँ पे यू गो, यू अगर आप एक गोस्ट राइटर हैं, आपने एक आर्टिकल लिखा है, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, तो आप मीडियम पे अपना एक बनाएं पेज, एक कहते हैं उसको, पेज ही कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, तो आप वहाँ पे पोस्ट करें, जस्ट पोस्ट उसको थोड़ा सा बदल के अपना वर्क वहाँ डालें, एंड देन योर पोर्टफोलियो. यू कैन नॉट क्लेम दैट वर्क, बट आप अपना खुद से बना के लिख के कर सकते हैं. और अब जैसे नाउ आई हैव पब्लिश्ड वर्क. पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो नहीं था, सो गेटिंग जॉब वाज बैड, बट अब मेरे मेरे पास एप्स हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, जिनकी मैंने मार्केटिंग कंटेंट है मेरे पास. तो बस अब लोग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर निकलें. सिर्फ कंटेंट राइटिंग इज नॉट ऑल अबाउट राइटिंग ब्लॉग्स, इट्स अबाउट राइटिंग कंटेंट इन द एप्स. दैट इज कंटेंट राइटिंग. It's about writing content to Google Play Store के ऊपर. When you search an app, that is content that comes under content writing. तो उस पे जाएं. And then for everyone who's starting content writing out there, expectations हर बंदे की बहुत ज़्यादा होती हैं. We all want to get what we deserve, which is a good thing. But अगर आप initial stage पे हैं, offer low cost service. आप आपका फोकस होना है अपना पोर्टफोलियो बनाना, बिकॉज जब आप आगे जाएंगे यू नीड टू सेल योर सेल्फ टू डिफरेंट पीपल कि भाई ये मेरा काम ये है. उसके लिए इनिशियली आप लो कॉस्ट सर्विसेज पे जाएं. स्कैम होता है, हो जाए, बट जस्ट डू समथिंग, राइट समथिंग, गेट समथिंग पब्लिश. Role. So LinkedIn is again everyone's gonna say I'm mentioning LinkedIn again, but this helps. This is a magic tool. LinkedIn has helped me getting so many jobs, so many clients, so many projects, because you can see your achievements on LinkedIn. If you don't have a good portfolio, does not matter. Your LinkedIn account has everything that everyone needs. Your skills, your everything. So you're gonna get people there. तो अपना लिंक्डइन बनाएं, वो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो ही है. एंड देन आई डिड वाज लर्निंग डिफरेंट ट्रेंड्स. तो मैंने जब ट्रेंड बदला, मैंने अपनी इंडस्ट्री बदल दी. मैंने ट्रैवल से आईटी की तरफ स्विच कर दिया, बिकॉज ट्रेंड वाज चेंजिंग. पीपल यूज्ड टू लव ट्रैवलिंग. फिर कोरोना आया, उसके बाद तो ट्रैवलिंग वाज वेरी लाइक डाउन चली गई. नो वन वांटेड टू ट्रैवल. दैट इज व्हेन आईटी केम इनटू द फील्ड. फिर वहाँ पे शिफ्ट कर लिया. एंड देन नेटवर्किंग जो है, when it comes to networking, I got so many referrals and recommendations from the people I have worked with. वो जब आपकी नेटवर्किंग होती है, that has helped me even in my portfolio. मतलब अब मेरे पास है, मैं किसी मुझसे कोई पूछेगा मैं दिखा दूंगी, यार इस बंदे से कांटेक्ट कर लो. I have worked with them. So it has helped a lot, and I tell everyone कि अपना नेटवर्क बनाएं, अपने अपने पब्लिश चीजें लेके आए उसके अपने सबके लिए, काम के लिए. All right, Miss Amna, you didn't talk about Fiverr or Upwork. What about those platforms? Okay, that just skipped my mind. Fiverr and Upwork, they are good platform. They're decent. It is hard to get clients now because of the saturation. It is really hard. And then there are certain SEO techniques that you need to apply to your bids now to get noticed. But yes, Fiverr and Upwork are good because you can directly work with the client. You can, मेरा international media के साथ एक तरह से कह लें आप interaction ही through Fiverr हुआ था. I work directly with people in US, UK, and everywhere. So it is important for anyone who's starting. I think Fiverr and I think Upwork more, because Upwork gives you more subtle projects than Fiverr. Fiverr is freelance. Upwork goes more to a project based thing. So I think these two platforms are going to polish you. They're going to get you really good portfolio, because आपके पे वो एक international client है जब आपके पास आती है ना, so that is a very big thing. So I think yes, that is something हर किसी को जाना चाहिए उस पर. All right. और आपके ख्याल में what are currently the most demanding niches in international or Pakistan's content writing industry? IT
and not just simple information technology that comes to generative AI. उसके ऊपर IT is excelling in Pakistan, in international market everywhere. Then healthcare is excelling right now. अब healthcare के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग researches आ रही हैं different, and there are just so many things that others want to know जिसके ऊपर blogs बहुत ज़्यादा चाहते हैं. E-commerce and digital marketing are doing fabulous job out there. आप खुद के digital marketing में you're just doing good to yourself. And then finance के अंदर अब बहुत ज़्यादा डिमांड है राइटिंग के रिलेटेड, नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट राइटिंग का वही मैं बताती हूँ, नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग ब्लॉग्स. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यू हैव टू सेल अ प्रोडक्ट, यू हैव टू राइट वेरी इंगेजिंग शॉर्ट कॉपीज, कॉपी राइटिंग उसमें आ जाती है. सो देयर आर मेनी थिंग्स टू कंटेंट राइटिंग, नॉट जस्ट ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ही हमारी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की. एवरीथिंग इज जस्ट शिफ्टिंग ऑनलाइन नाउ डेज. पहले तो शुरू में इट वाज जस्ट पाकिस्तान में कह लें दराज था. अब यहाँ पे कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं. पीपल जस्ट वांट टू सेल देयर थिंग्स ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं. सो दे नीड राइटर्स फॉर दैट. एंड देन फाइनेंस के लिए भी एवरीवन नीड्स इट. मेरे ख्याल से ये जो चार इंडस्ट्रीज है ना, दे आर टॉप अभी इस मोमेंट पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली. All right. Basically, I have a few online questions that I want to bring in. Um, okay, so the first question is, what future do you see for content writers, given the evolving technology and growing access to the internet and AI tools? I think this is going to grow really well with AI tools to your aid. Things have totally changed. अब आपको घंटों नहीं लगाने पड़ते. इफ यू डोंट, आई व्हेन आई स्टार्टेड विद टेक्नोलॉजी, मैं तो बीएस इंग्लिश की बनती हूँ, मुझे क्या पता डेवऑप्स क्या है या क्लाउड क्या. दिस वाज वेरी, मैं तो डर गई थी व्हेन फर्स्ट आई गॉट टू नो कि भाई टेक्नोलॉजी पे लिखना है. बट नाउ अगर आपको कोई कहता है जस्ट गो टू एआई, गेट हेल्प, गेट योर इनिशियल, इतनी अब तो इतनी फिट प्रॉम्प्ट्स आ गई हैं जो आप एआई को दे सकते हैं. यू कैन टेल एआई टू act as a digital marketing expert and design your marketing plan proper, and it's going to do that. तो get help from them. And then इसमें एक इशू ये भी आता है, when AI is in so much demand, it's gonna go down one day or another. AI totally नीचे जाएगी ही जाएगी. Google has this habit of doing this thing जहाँ पे वो 1 मिनट में आपका सारा बेड़ा गर्क करता है. तो it's going to take a turn. तो उस पॉइंट पे आपको AI जो है अपने स्किल्स के लिए यूज करनी है. Because I have seen people totally depending on it. वो AI से content निकलवाते हैं, they copy paste it, they just rephrase it. वो नहीं करना. Use AI, आप अपना उस पर research करें, and then I think with that you'll get the skill. With that you will get to learn how to write. और फिर वो future वो आपका पूरा आगे जाएगा. And learn about AI tools always. We reject people in interviews जो कहते हैं कि हमें AI का नहीं पता. That is a very tactic way कहने का कि भाई हम शायद select हो जाएंगे. But I straight away reject people जो कहते हैं AI tools का नहीं पता. Stay in contact with trend. AI is trend right now. So stay in contact, learn about it, and then I think it's going to grow really good in coming future. All right. Another question is basically about I think the unethical part of using AI tools. So the question is, AI companies are being phantom text to prevent unethical use of these tools. Do you think this will affect how AI will be used in the future for content writing? This might affect AI, the content writing industry. But then again, if you're using it right, if you're using it to learn something, if you're using it to polish your skill, there is nothing to be afraid of. मसला तब आएगा when all this AI dependent people, जब AI चला जाएगा ट्रेंड से, इनको मसला आएगा जो पूरा ही डिपेंड करके बैठे हैं उसके ऊपर. देयर राइटिंग इंटायरली डिपेंड्स ऑन इट. बिकॉज ऐसे नहीं चलता है अब कि आप बिल्कुल ही जनरेट करो एक कंटेंट, उसको पब्लिश कर दो और कहो कि आई हैव अ स्किल. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आप उसको रखो एआई को, आप चेंज होंगे, हो सकता है बिकॉज एआई समटाइम्स प्रोवाइड यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आपको फैक्ट्स गलत बताएंगे. यू हैव टू क्रॉस चेक इट. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिपेंडिंग ऑन एआई और बस एआई के चेंज आने से सब बदल जाएगा एकदम से, ऐसे नहीं होगा. एआई आपका एक टूल है, इट्स गोना गेट यू इन्फॉर्मेशन, फिर आपने वो जाना है, आपकी रिसर्च उधर ही है.
आपका राइटिंग स्किल उधर ही है, आपका methodology to write in a way that engages people and that makes things simple is still there. AI is just to help you, तो वो आता है जाता है, उससे आई डोंट थिंक राइटिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, फ्यूचर खत्म हो जाएगा, दैट इज नॉट समथिंग दैट्स गोना हैपन. यू नीड राइटर्स, अब तो हर चीज ऑनलाइन जा रही है, सो राइटिंग इज समथिंग जो चाहिए ही चाहिए. Okay, we have a third question. It's basically very specific, but I'll rephrase it. How much a person can earn from content writing? This is a good question. It And basically, depends. the person was asking how much you earn from content writing per month. Okay, let's just skip my earnings. That might not impress you guys. But the earning really depends on it, on like the field you're going. If I am a team lead, so technically I earn more than a basic content writer. But then, if you're working with an international company, my very good friend is working with an international company, and she earns more than 2 lakhs. This is happening now. Content writing is not something जो 30-40 हजार की बात रह गई है, but that is for an experienced person. Initially, दिल सबका करता है ज़्यादा पैसे कमाएं, but कि अगर 10 में 10 हजार में भी मिल रहा है ना, तो बच्चों ले लो, गेट द एक्सपीरियंस, यू गना गेट मोर, आप जाओगे. एंड देन इफ यू स्टार्ट वर्किंग, अभी जैसे मैं हूँ, आई एम एफिलिएटेड विद द कंपनी, बट इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट राइटर, आप डायरेक्ट फाइवर और अपवर्क पे आप चले जाते हैं, उस पर आपका सिंगल प्रोजेक्ट जो है $500 तक भी जाएगा. एंड इमेजिन इफ यू आर गेटिंग 6 to 7 प्रोजेक्ट्स मंथ, तो दैट्स गोना रॉकेट योर अर्निंग. तो मतलब जस्ट गेट इन इट, जितनी भी अर्निंग है स्टार्ट कर लो. um, my next question is about core skill sets that I should develop as a BS English student in order to stand out as a successful content writer. सबसे पहले तो वर्क ऑन योर राइटिंग. I think being a BS English student is a blessing because we get to read so many writers, and not just read them. We get to learn their writing style, their methodologies and everything. So that is something that is going to help you in your content writing career, because आपको पता लगेगा कि there is a reason why एक novel है हम पढ़ें, there is a reason why we want to read it at the end, and it's not just the story, it's the writing style. So learn those writing style, learn how they are engaging people, how they're engaging you, and polish your research abilities, polish your skills. जब टीचर्स कहती हैं रिसर्च करें, तो just don't go to AI please. AI is a tool, it's going to help you in profession. अभी studies के अंदर I suggest don't use AI too much, because आप dependent हो जाओगे उसके ऊपर. आपका पूरा अभी I know I have conducted recently interviews, and there were people जो मुझे इंटरव्यू के अंदर आंसर भी AI से लेके दे रहे थे. एंड if you work with AI as much as I have done, तो आपको 1 मिनट में पता लगता है कि यार ये तो AI का बनाया हुआ आंसर है, दिस इज नॉट समथिंग आप अपने माइंड से बोल रहे हो. डोंट डू दैट. अभी being a student, just focus on your editing, writing skills, research abilities, and then with along with the studies, learn SEO. SEO is going to take you to very good places. आपको बहुत ज़रूरी है राइटिंग के लिए एसईओ आना, कीवर्ड रिसर्च करना आना. तो यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी वीडियोस जो फ्री में. इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन लर्निंग दिस थिंग, डोंट स्पेंड इट, इतना ज़रूरी नहीं है. देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस. आप अपने साथ साथ ही, क्योंकि राइटिंग बीइंग अ स्टूडेंट आपने राइट करना ही करना है, तो लर्न अबाउट. अपनी असाइनमेंट के अंदर आपने थोड़ा बहुत एसईओ स्किल्स लगा लिए, थोड़ा जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. उसके बाद लर्न टूल्स. बिल्कुल भी भागना भी नहीं है टूल से, बहुत डिपेंड नहीं होना, बट ये भी नहीं कि पता ही नहीं है टूल्स का. यही टाइम है सीखने का. अभी अभी पता लगेगा तो आगे आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं. सो लर्न अबाउट दैट, लर्न अबाउट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, कि आप उसको सिंपल किस तरह, मतलब नॉट लाइक बिल्कुल ही कोई आपने नॉवल नहीं लिखना कंटेंट राइटिंग के अंदर, बट नो कि आपने किस तरह एंगेज करना है. थोड़ी स्टोरी टेक्निक्स में जाएंगी.
And then, as a student, I think everyone should learn how to break down complex ideas into simple. When you're writing, you have to have a mind कि मेरे रीडर को कुछ भी नहीं पता है, and I am going to tell them. You have to analyze your audience, और वो उसके लिए it's very important to learn how to break down complex ideas. Um, m- Looking ahead, what are your aspirations for your career as a content writer? Oh, I think right now I've been working in IT for a very long time, 4 years to be exact. So I want to expand that. I want to expand my writing skills, my specialization. I want to write about healthcare and finance. And then another thing I want to see myself doing is project management, not just team management. I want to handle an entire project from making all the necessary changings and everything. So I think that is what I want with my career. That is what I aspire right now. And then I want to do more collaboration with international clients. That is something I think everyone, and not just with simple clients, with heavy brands. जिससे पता लगे कि भाई काम किया इस बच्ची ने. Ajay, my last question from you is basically, in each and every career, you have to be, when you start, you have to be passionate, right? You talked about this earlier, this writing industry is extremely saturated. It's competitive. So, how much passionate I should be in order to excel in Pakistan in content writing industry? देखिए पैशन इज समथिंग वो तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग में रहा ही नहीं. इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम्स यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पैशनेट अबाउट इट. सो if it's coming to something that you want to opt for your career, so I think your passion level should go to 7 out of 10. You need to be at that level जहाँ पे आप डिफरेंट चीजें करना चाह रहे हैं. यू बिकॉज अगर आपका दिल नहीं कर रहा ना, कंटेंट राइटिंग देखिए एक ऐसी चीज है जो आप एआई के थ्रू कर लेंगे. मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल कर नहीं सकते, बट देन इट एंड्स देयर. योर करियर इज गोइंग टू स्टिक टू दैट पॉइंट कि आपने एआई से छाप के डाल दिया नेट के ऊपर. ठीक है. इफ यू रियली वांट टू एक्सेल योरसेल्फ, तो वो एक खूनी एक कहते हैं ना एक चाह होती है तभी राह बनती है आपकी. तो यू नीड टू हैव दैट पैशन इन इट कि भाई करना है, सीखना है. पैशन असल में जो होता है ना, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, पैशन कुछ करने का नहीं होता, पैशन सीखने का होता है. योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन लर्निंग. तो 7 का मैंने नंबर दिया, यू कैन गो टू 8 और डोंट गो डाउन टू 7. Okay, Miss Amna, thank you so much for joining us today. Thank you so much for sharing your insightful experiences with us. It was really grateful. And if you want to share something, because this is the end of our webinar. uh, I only thing I want to share is कि बच्चों, everyone from semester 1 to semester 8, just start. जिस direction में जाना है जाओ. And if you guys don't have anything, कोई pattern नहीं है mind में इस time पे कि future में करना क्या है, तो no कि मैं अपने 7वें semester के teacher को ये बता रही थी कि मुझे बस BS करके हर field की masters करना है. How stupid does that sound? But I was telling it because मेरे हालांकि मैं उस टाइम पे आई वाज अ स्किल्ड कंटेंट राइटर, लेकिन मुझे नहीं पता था मैंने फ्यूचर में क्या करना है. तो इट इज ओके टू डोंट नो कि इस मोमेंट पे कि आपने क्या करना है. जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, क्योंकि बहुत सेचुरेशन है इधर. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बीएस के बाद अच्छी नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं. सो जस्ट स्टार्ट, डिसाइड क्या करना है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. मेरा एडवाइस है ये. All right, ma'am, just, we have an online question. Um, and this person is asking, I've been in the content creation journey for well over 3 months now, and I'm earning good 40 to 80,000 rupees per month, but I'm unaware about techniques in writing. How do you suggest I may grow them? uh, Follow YouTube videos. There are so many content creators that are going to YouTube and just throwing away free sessions on content writing. And then get into IT. If you are a content writer, I always say learn about IT.
वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपके फ्यूचर के लिए। आई थिंक IT इज द, आई थिंक वी ऑल एग्री दैट IT इज द फ्यूचर। तो उसके अंदर जाएं, वहाँ पे अपने स्किल करें। फिर आप सिर्फ ब्लॉग, इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर, सिर्फ ब्लॉग्स के ऊपर मत रहें, गो टू स्क्रिप्ट राइटिंग, गो टू डिजिटल मार्केटिंग, और वो सारा डेटा जो है आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। और आपको लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें, आप डिफरेंट ब्लॉगर्स को फॉलो करें। देयर आर CEOs ऑफ कंपनीज दैट शेयर कि वो उनकी जर्नी क्या थी। यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो इफ यू वांट टू हैव सम स्किल्स, आपने अपने आप को पॉलिश करना है, तो आपको फॉलो करना है बस डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट जगहों को। डोंट जस्ट लाइक अपने आप को बंद मत करें एक डब्बे के अंदर। डू समथिंग, अपना स्किल यूट्यूब पे जाकर, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं अब तो, मतलब हर जगह के ऊपर लोग इसके ऊपर बात करें। इवन आप इंस्टाग्राम खोलें, देयर आर सो मेनी पीपल टेलिंग यू कंटेंट क्रिएशन के अंदर और सारा। So I think follow industry trends, go to YouTube, learn these skills, and if you have the budget, so there is nothing bad in like पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करने के अंदर किसी अच्छे कोर्स के। बहुत से कोर्सेज हैं ऑनलाइन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, नॉट जस्ट सिंपल वन, बाहर की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज बहुत कोर्सेज करवा रही हैं। तो वो कर लें इफ़ यू हैव द बजट, एंड इफ नॉट देन यूट्यूब इज़ योर आंसर। Thank you so much. Thank you so much for sharing insightful experiences with us. That's it. That's the end of our second session. Um, we are very grateful to the guest alumni speakers for honoring us with their esteemed presence in today's session. And I am confident that today's discussion will expand the academic and professional horizons of the attendees. I also appreciate the members of the society whose efforts made this series of webinars possible. And once again, thank you so much, everyone, for joining us today and being patient with us. I wish the best of luck to all of you for your future endeavors. Allah Hafiz. Good night.